Hi, and welcome back to my channel Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, your host. So we were discussing sleep disorders. Okay, my last video was on narcolepsy, and this video is on sleep apnea. So let's talk about sleep apnea. Sleep apnea is a condition that causes you to stop breathing while you're sleeping. Well, the word apnea comes from the Greek word breathlessness. A sleep apnea happens because you stop breathing in your sleep or the collapse of pharyngeal airway which obstructs your blockage of the airway, and then you face problems in breathing, and that is resulting in lack of oxygen activates a survival reflex that wakes you up just enough to resume breathing. वो आपको उठा देगा and you wake up. While the reflex keeps you alive, it also interrupts your sleep cycle that prevents restful sleep and can have other effects, including putting stress on your heart that can have potentially deadly consequences. अब आप सही से सो नहीं पाओगे, कभी कभार आप उठ जाओगे, कभी कभार नहीं भी उठ पाओगे, तो डेडली कॉजेस भी हो सकते हैं. हु डज स्लीप अपनिया अफेक्ट, किसको किसको हो सकता है स्लीप अपनिया? अगर आपका अगर आप मिडिल एज में एज से ऊपर हो, 50 या 50 ईयर्स के अबव हो, तो आपके जो फेरेंजियल एयरवे है वो पुराने एज के साथ जो एयरवे है वो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और उसके साथ अगर आप ओबीज हो या फिर आप मेल एंड ओबीज एंड देन फिर उसके बाद आप अल्कोहल ज्यादा लेते हो या फिर स्मोकिंग ज्यादा करते हो, तो आपका तब आपका लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस वजह से भी हो सकता है. पीपल विद हार्ट कंडीशन सच एज अर्टियल फिब्रिलेशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इनको भी हो सकता है. पीपल हु टेक ओपियोइड पेन मेडिकेशन, इनको हो सकता है. Central sleep apnea is most common in certain group of people. Okay, for some people using CPAP or having or who have obstructive sleep apnea, these can trigger the development of central level known as treatment emergent central sleep apnea. When people live at high altitudes, this can also cause central apnea to occur because वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो यहाँ पे भी apnea हो सकता है. ठीक है. Up, how does sleep apnea affect our body? To understand how sleep apnea works, it helps you know a little bit about the human sleep cycle. And sleep वन में लाइट स्लीप, वही हमने पूरा आपको स्लीप साइकिल बताई है. स्लीप टू में डीप स्लीप, स्लीप थ्री में स्लो वेव स्लीप होती है. दिस इज डीपेस्ट स्लीप थी, मेक अबाउट 25% of your time and spend time sleeping time. It's very hard to make someone up in that sleep. And आपका पैरासोमनिया, स्लीप वॉकिंग, सोमनोलिज्म, यही सीन होता है. आरईएम sleep, the rapid eye movement sleep. This stage is when you dream, and when in REM sleep, you can see their eyes moving beneath their eyelids. When you fall asleep, you typically enter stage one and then into the stage two and then the stage three and then REM sleep. It takes around 90 to 110 minutes. Okay, and then how sleep apnea disrupts your sleep cycle? कैसे disrupt करता है? Your brain constantly monitors your body status and adjusts your heart rate, blood pressure, breathing, etc. Your blood oxygen levels can drop when you stop breathing because of either apnea or hypoapnea. Apneopic episodes during sleep stop breathing up to few minutes and reported by patients. And the apnea में क्या होता है? This is when you stop breathing while asleep. You almost have combines the Greek root a, which means not, and apnea, which refers to breathing, combined in meaning breathless, and hyponia. This combines hypo and pnea. The root hypo means low or under. Combining these two is under breathing or low breathing, which means you are around breathing and enough to maintain oxygen level in your blood. फिर आपका हीमोग्लोबिन और पूरा ब्लड साइकिल काम नहीं करेगा सही से. ठीक है. द मोर सीवियर योर स्लीप अपनिया इज, मोर ऑफन यू विल दीज इंटरप्शन हैपन. जितना ज्यादा सीवियर होगा उसके बाद इतना ज्यादा इंटरप्शन होगा आपकी स्लीप में. माइल्ड स्लीप अपनिया में क्या होता है? दिस लेवल मींस अ पर्सन हैज AHI बिटवीन 5 and means they have 5 to 15 apnea or hypoapnea events per hour. 5 से 15 तरीके के अपनिया हो सकते, 5 से 15 बार अपनिया हो सकता है एक आवर में. However, healthcare providers also consider apnea symptoms at this level. Moderate sleep apnea में people with this moderate sleep of 15 to 29 events per hour. That means a person sleeps 8 hours, stop breathing and or wakes up at 120 to 239 minutes. भाई इसका मैं आप देखो sleep disruption कितना हो रहा है, कितनी बार बंदा उठ रहा है. People with severe sleep apnea wake up to 30 or more times in an hour. That hour they stop breathing and or wake up 240 times. इतनी बार उठ रहा है, तो भाई उसकी स्लीप कैसे पूरी होगी? फिर फटीगनेस आएगी और आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा और प्रॉब्लम्स भी आती रहेंगी. ठीक है. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्लीप एपनिया? भाई आपका पूरी तरीके से सो नहीं पा रहा, इतनी बार उठ रहा,
तो टायर्ड एग्जॉस्टेड फील करोगे, डे टाइम स्लीपीनेस रहेगी पूरे टाइम, स्नोरिंग रहेगी, जो आपका पार्टनर आपको बताएगा, मूड चेंजेस रहेंगे क्योंकि आप सो तो पा नहीं रहे हो सही से, डिसरप्शन इन ब्रेन फंक्शन क्योंकि आपका ब्रेन सही से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, वेकिंग अप रिपीटेडली इन द मिडल ऑफ द नाइट, पॉजेज एंड ब्रीदिंग व्हाइल asleep दैट अदर्स विटनेस, बहुत आपका जो बेड टाइम पार्टनर होगा वो विटनेस करेगा, ठीक है। these symptoms while you are asleep, unusual breathing patterns हो सकते हैं, ठीक है। इंसोम्निया, नाइट स्वेट्स एंड फीलिंग रेस्टलेसनेस नाइट, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है क्योंकि आप सही से सो नहीं पा रहे हो, वेकिंग अप फीलिंग शॉर्ट और ब्रेथ और लाइक यू आर चोकिंग, हेडेक्स हो सकते हैं स्पेशली व्हेन वेकिंग अप, ये हो सकता है। स्लीप एपनिया इन चिल्ड्रन में क्या हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी और ट्रबल फोकसिंग ऑन परफॉर्मिंग पुअर इन स्कूल, ओके, लाउड स्नोरिंग हो सकती है, बेड वेटिंग हो सकती है, फ्रीक्वेंट आर्म और लेग मूवमेंट्स व्हाइल स्लीपिंग, स्लीपिंग इन अनयूजुअल पोजीशन और स्लीपिंग विद नेक एक्सटेंडेड, रिफ्लक्स और नाइट स्वेट्स हो सकते हैं। व्हाट कॉजेज स्लीप एपनिया, कि भैया जब आपका फेरेंजियल एयरवे कोलैप्स करेगा, स्लीप एपनिया यूजुअली हैज स्पेसिफिक कॉजेज एंड देयर एविडेंस दैट इट may run in families. Overall, there are three main forms of sleep apnea, that is obstructive sleep apnea, central sleep apnea and mixed. Okay. Obstructive sleep apnea में क्या होता है? This is the common form. Obstructive sleep apnea happens when a muscle in your head and neck while you are asleep causing the surrounding tissue to press on your windpipe that obstructs air ability. तो भैया जो वही pharyngeal airway को obstruct कर रहा है, तो ये sleep apnea हो रहा है. Central sleep apnea occurs because of your problem in the brain. Brain problem हो रहा है. ठीक है, your brain manages your breathing all the time, including while you sleep. Central sleep apnea happens when your brain doesn't send signal to keep ब्रीदिंग रिलेटेड मसल वर्किंग, ठीक है। फिर आपका हार्ट फेलियर हो सकता है और लो ब्लड सेंट्रल मसल कैन हैपन फॉर मेनी रीजन इंक्लूडिंग हार्ट फेलियर, लो ब्लड ऑक्सीजन में हो सकता है, उससे हो सकता है। ट्रीटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इनिशियली विद सीपीएपी, दिस typically goes away with consistent CPAP use. नर्वस सिस्टम कंडीशन लाइक एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है। Okay, let's talk about mixed के बारे में. There are also mixed complex type of sleep apnea. This form is combination of both obstructive and central, दोनों के आ सकते हैं. What test will be done? Polysomnogram, जो पहले ही बताया सारे sleep disorder में, जिसमें आपका sleep के waves चेक करते हैं, brain के waves चेक करते हैं और blood oxygen level चेक करते हैं. होम स्लीप apnea टेस्टिंग आपका पार्टनर चेक कर सकता है कि आप कैसे सो रहे हो, क्या है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट है. पॉसिबल ट्रीटमेंट इंक्लूड कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एंड अडेप्टिव वेंटिलेशन डिवाइसेस, ओरल अप्लायंसेस, माउथ पीसेस यूज कर सकते हैं जिससे पॉजिटिव एयर फ्लो बना रहे, नर्व स्टिमुलेटर्स यूज कर सकते हैं, सर्जरी हो सकती है, ठीक है, जिसमें यूपीपीपी एक सर्जरी है वो यूज कर सकते हैं जिसको आपका पूरा जो फेरेंजियल एयरवे उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसके बाद मेडिकेशन, सेंट्रल स्लीप अपनी ओनली, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या कर सकते, दीज नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट और अप्रोचेस कैन typically improve obstructive sleep apnea or resolve it. They aren't cures, but they can reduce apnea to the point stops happening or isn't severe enough to cause symptoms. These include weight loss आप कर सकते हो, अल्कोहल छोड़ सकते हो, और people with diabetes and other things, they can reduce that, okay? They can work upon it and they can have pills for it to fix it. So this is all about sleep apnea and sleep disorders. Okay, my next video is on restless leg syndrome. And if you have any question about this disorder or any other sleep disorder, please comment in my comment section, or any doubt, please comment in my comment section. So this is all about sleep apnea. Thank you.